Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the numerical questions based on the topic acceleration and the equations of motion. Now today I am going to solve you the 4 questions. Note down the very first question. A car increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds. Calculate its acceleration. This was the very first question. Note down the second question. A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Find initial velocity if retardation is 2 meter per second square. Note down the third question. An object undergoes an acceleration of 8 meter per second square starting from rest. Find the distance traveled in 1 second. Note down the next question. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate first point acceleration, second point the distance covered by the car in that time. After that, move to the very first question. The very first question indicates that there is a car which increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour. बच्चों एक कार गिवन है जो अपनी वेलोसिटी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है 20 km पर आवर से 50 km पर आवर तक. टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स. तो बच्चों यहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है and final velocity given है and time given है. Note down initial velocity 20 km per hour, final velocity 50 km per hour, time given है बच्चों 10 seconds. ठीक है. Now we have to calculate the acceleration. We have to calculate the acceleration over here. अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो बच्चों कि u, v और t ये जो इनकी यूनिट्स गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होता है कि u, v, t, a एक्सेलर क्या चीज है गिवन है, तो आपने गिवन को आइडेंटिफाई कर लिया. आफ्टर दैट इनकी यूनिट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं आइडेंटिफाई करना होता है. तो इनकी यूनिट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए था. यहाँ पे जो टाइम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 20 multiplied by 1000 upon 3600. इसके लिए 50 multiplied by 1000 upon 3600. जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड में. इनिशियल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 50 upon 9 मीटर पर सेकंड. आ गई. फाइनल वेलोसिटी आपकी इसी तरीके से आ जाएगी 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन we get that v is equal to u plus at. And we have to calculate the acceleration. So acceleration can be written as u इधर आ जाएगा equal to के, तो माइनस के साइन के साथ इधर a हो गया, ये t a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, equal to इधर लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा. ये चीज समझ में आई. इस पूरे स्टेप्स को नोट कर लीजिए. ओके. अब आपके पास फॉर्मूला आ गया है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का. नाउ सॉल्व द क्वेश्चन. तो acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time. Acceleration final velocity की आपने क्या वैल्यू निकाली थी 125 upon 9 minus initial velocity की वैल्यू थी आपकी 50 upon 9 divided by time कितना था 10 seconds. अब इसको सॉल्व करके बताइए आप कितनी वैल्यू आएगी. दोनों का एलसीएम 9 है.
can be written as (75/9) into 10, that is equal to 0.83 meter per second square. This is the acceleration. Completed. Move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कौन सा है, आप अपनी क्वेश्चन आपने जो भी नोट किए हैं 5 क्वेश्चन उससे कंपेयर कर लेना। तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन है, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या कंडीशंस गिवन है, क्या क्या कंडीशन गिवन है जल्दी से बताओ। तो पहली कंडीशन आपको गिवन है टाइम, दैट टाइम इज इक्वल टू 20 सेकंड्स गिवन है क्वेश्चन में, एंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जा रहा है कुछ देर के बाद, दैट इज फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0 मीटर पर सेकंड, ये भी आपको गिवन है, एंड रिटार्डेशन गिवन है। रिटार्डेशन इज आल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के आगे आप नेगेटिव साइन लगा देंगे, और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। तो आपने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली हैं, और इसके बाद देखिए इनकी जो यूनिट्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो टाइम सेकंड्स में गिवन है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वहां सारी चीजें हैं। अब बताइए इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, we have to calculate the value of initial velocity, then v minus at is equal to u। at पॉजिटिव में था, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, it can be written like that, okay। now putting the value, फाइनल वेलोसिटी आपकी ऑलरेडी 0 है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 और टाइम गिवन है बच्चों 20, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट, एंड इट विल बी 40 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसे, नोट डाउन दिस स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या चीज है क्वेश्चन। Next question is, an object undergoes an acceleration of 8 meter per second square starting from the rest. Find the distance traveled in 1 second. तो क्वेश्चन में गिवन है एक ऑब्जेक्ट अंडरगो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पहले ही स्टार्टिंग में आपको गिवन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है when the object starts from rest, which means ऑब्जेक्ट रेस्ट में था चलने से पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर कोई भी क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, या ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, अगर यहाँ भी चीज आ रही है कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हिच मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। तो यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में आपके 0 गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम आपको गिवन है, टाइम इज 1 सेकंड, टाइम इज गिवन दैट इज 1 सेकंड। अब आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक बार रिवाइज करिए, उसमें देखिए कौन सी इक्वेशन इसके लिए सुटेबल है। आपको एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और टाइम गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वहां पे डिस्टेंस तो नहीं आती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हो, हाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहां पे इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, और टाइम भी है। तो by applying second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square, we have to calculate the distance। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, टाइम आपका 1 सेकंड है, 1 into 2 एक्सेलरेशन आपका 8 है, और टाइम अगेन आपका 1 है। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, ये हो गया into 8 into 1, ये हो जाएगा s is equal to 4 मीटर। 4 मीटर is the distance।
Note down the steps. Now move to the next question. The next question is, a car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration. क्वेश्चन में गिवन है एक कार एक्सेलरेट होती है 18 km per hour से, which means आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 18 km per hour and 18 km per hour से कितनी एक्सेलरेट होती है? तो एक्सेलरेट होती है अराउंड 36 km per hour. आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है 36 km per hour एंड टाइम, कितने टाइम में एक्सेलरेट होती है ये भी गिवन है, दैट इज 5 सेकंड्स. मतलब एक व्हीकल है जो 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 5 सेकंड के बाद जब उसको ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर हो गई. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेरी फर्स्ट पार्ट द एक्सेलरेशन. वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है. देयर इज एन एक्सेलरेशन एंड देयर इज अ डिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व the units. Initial velocity is given in 18 km per hour and final velocity 36 km per hour. ये ऐसा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से एंड डिवाइड कर दोगे 3600 से. सिमिलरली 36 into 1000 कर दोगे अपॉन 3600 कर दोगे. सॉल्व करके बताइए कितना आएगा. किलोमीटर आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड और 36 किलोमीटर का हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. अब आ जाते हैं पहले पार्ट के क्वेश्चन पे. फर्स्ट पार्ट u, v और t गिवन है. ये तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आता है बाय अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. What is the first equation of motion? V is equal to u plus at. And what we have to calculate over here? We have to calculate the acceleration. Then the formula will become v minus u upon t. That is equal to a. Where the u is shifted to that side, it becomes v minus u, and t is here in multiplication form. When it moves in the left hand side, it becomes divided in the divided form. So we can calculate the v is equal to 10. Initial velocity is 5. And the time is given again 5. That is acceleration. 10 minus 5, that is equal to 5. 5 upon 5, that is equal to 1. So the acceleration is 1 meter per second square. The very first part of the question is solved right now. Now move to the second part of this question. In second part, we have to calculate the distance. So for calculating the distance, we are having initial velocity, final velocity, time, and acceleration. Which formula we are going to apply over here? We can apply the second formula. So by applying second equation of motion, what is the second equation of motion? S is equal to ut plus half at square. You have to remember, you have to revise these equations of motion. What is the first equation of motion? What is the second equation of motion? You have to remember it. Now s is equal to, we have to calculate the distance. Initial velocity is given, that is 5. Time is given also 5 over here, plus half into acceleration is 1 and time is given, that is 5, and time ka square. So s is equal to 25 plus 1 upon 2 into 25. S is equal to 25 plus 25 upon 2. So you can calculate from this, that is equal to 37.5 meter. This is the answer. Now note down the some questions which you have to do on your own. Note down the steps and after that note down the questions. The very first question is, a ship is moving at a speed of 56 km per hour. On 1 second later, it is moving at 58 km per hour. What is its acceleration? Next, second question.
A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. Calculate the acceleration of the scooter. Next question. A body is accelerating at a constant rate of 10 meter per second square. If the body starts from rest, how much distance will it cover in 2 seconds? You have to solve these questions. Okay.